Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we'll discuss biology class 9 kingdom of classification, and in this lecture we will discuss 2, 3 and 5 kingdom of classification. Now let's move towards the 2 degree of classification. This degree of classification यानी कि 2 kingdom classification system developed की गई थी Carlos Linnaeus in the 18th century. डिवाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम। उसने जो ऑर्गेनिजम्स हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था प्लांट टाइप यानी कि रिलेटेड टू प्लांट्स एंड द सेकंड वन इज एनिमलिया रिलेटेड टू एनिमल्स बेस्ड primarily on the observation of macroscopic characteristics and modes of nutrition। उसने क्लासिफाई किया था मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की मदद से उसने दो किंगडम बनाए थे, एक प्लांट टाइप और एक एनिमलिया। Did not account for microorganisms such as bacteria and fungi, which have distinct characteristic and evolutionary relationship and are placed in kingdom of plant type। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि बैक्टीरिया फंजाई हो गया जो जिनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रॉम द प्लांट्स, उसने क्या किया था, उसने तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन द फील्ड ऑफ प्लांट टाइप रख दिया था। This system is considered simplistic and inadequate in reflecting the true diversity and evolutionary relationship among living organisms। ये वाला जो सिस्टम है ये simplest classification system है और ये inadequacy देता है यानी कि हमें complete information नहीं देता about living organisms। नेक्स्ट है जी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये प्रपोज किया गया था जी बाय अर्नस्ट हैकेल इन 19th century। डिवाइड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू थ्री किंगडम, प्लांटा, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा। इसने तीन किंगडम बनाए थे, एक था प्लांटा रिलेटेड टू प्लांट्स, एनिमलिया रिलेटेड टू एनिमल एंड प्रोटिस्टा रिलेटेड टू प्रोटिस्ट। Protista kingdom include unicellular eukaryotic organisms that don't fit into the plants or animal categories such as protozoan and algae। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर उसने वो वाले यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फिट किए थे जो कि ना तो प्लांटाई में आ सकते हैं ना ही एनिमिलिया में आ सकते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हो गए प्रोटोजोन या algae। Reflects the recognition of microorganisms and acknowledges their distinct characteristics and evolutionary relationship। अब जो उसने माइक्रोऑर्गेनिजम्स थे उनके जो रिकग्निशन है उनको एक्नॉलेज किया और जो उनके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्क्राइब किया और उनको जो है अलग क्लास में रख दिया। However, this system has still limitation as it does not account for the differences between prokaryotic and eukaryotic microorganisms। लेकिन इसमें ये था कि उसने जो तमाम माइक्रोऑर्गेनिज्म से यूनिसेलुलर करार दिए थे और कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा था कि विच आर प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड विच आर यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये उसका ड्रॉबैक था। नेक्स्ट आया जी फिर 5 डिग्री या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यह प्रपोज किया गया था जी रॉबर्ट विटेकर इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी। इसने क्या किया था जी 5 किंगडम बनाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट वन इज प्लांटाई प्लांट, एनिमलिया एनिमल, फंजाई रिलेटेड टू फंजाई, प्रोटिस्टा रिलेटेड टू प्रोटिस्ट एंड मोनरा रिलेटेड टू बैक्टीरिया। Recognizes the fundamental differences between prokaryotic and eukaryotic microorganisms, placing bacteria in a separate kingdom। अब इसमें जो हमें उसने बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को उसने अलग अलग ग्रुप में रखा था और बैक्टीरिया को उसने kingdom में रखा था। Reflects a greater understanding of the diversity and evolutionary relationship among living organisms। और जो इससे हमारे पास डाइवर्सिफाई हो गया था किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मोनरा किंगडम हैज सिंस बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डोमेन्स। मोनरा को मजीद दो किंगडम में क्लासिफाई किया गया या डिवाइड किया गया, बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया एंड आर्काई जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया विद डिस्टिंक्ट जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बैक्टीरिया बनाए जो कि असल बैक्टीरिया होता है और दूसरा था आर्काई।
This classification system is widely accepted and forms the basis for modern classification schemes. और जो 5 इंडियन क्लासिफिकेशन था ये वाइडली एक्सेप्टेड किया गया क्योंकि उसने क्या किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में दिया बैक्टीरिया को अलग अलग और प्लांटाई और एनिमल्स को माइक्रोऑर्गेनिजम्स से सेपरेट कर दिया जिसकी वजह से ये वाला सिस्टम जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड किया गया और इसको बेस बनाया गया फॉर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीम्स. Now that's all about for today's lecture. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to your friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video, we'll discuss about a virus, their structure and their composition. Till that time, take care. Allah Hafiz.